ओह शिट, राशन नहीं बढ़ रहा है भाई यार, हमें भी ले लो, उसी में आ जाए मेरा। Okay, good morning from Gopalganj Bihar. We reached Gopalganj last night. There are our bikes, and this is how the view looks like from here. There is our room. You know what? This is not the kind of view I normally show. Check this out. Okay, here's the plan for today. We'll be riding 500 to 450 kilometers. We'll be going till Lucknow. That is our plan for today. I'm still not dressed. Dipesh bhai is getting dressed. He's getting ready. We are not done with our breakfast as of now. And what's up guys, this is Mandir. Welcome to my channel. I hope you guys are doing great. So let's pack our things. Let's get ready. And I'll see you guys on the ride. Face. Okay. Okay. मच्छी बाजार, मछली बाजार है यहाँ. But we need a place where we can have breakfast. क्या मिलता है भैया? पूरी कचौड़ी मिलेगा, जलेबी मिलेगा, सभी मिलेगा. बिहार में आके पूरी खा लेते हैं और उसके साथ जलेबी. वेस्ट बंगाल से आए और जलेबी खा रहे हैं सुबह सुबह. टेंशन है नहीं. द पूरी looks a little thick comparing to the puris I have eaten in West Bengal, I think, Siliguri mein. We'll have this and then as soon as possible we'll hit the road. I think it's gonna take 8 hours. Depends on how we ride. तो सबसे पहले ये खाते. अरे भाई अंकल, ये मक्खी फ्री है क्या? हाँ मक्खी कितना आ रहा है? कोई बात नहीं, खा लेते हैं. This is the पूरी and सब्जी. तीखा है बे. So let's see what are the stuffs we can find. Okay, the last glimpse of Gopalganj Bihar, because we'll be going to the northern part of India, Uttar Pradesh, Lucknow. We'll take breaks in between. As of now, the time is 8:25. You see the difference. भैया का कैरियर में है आलू और मेरा कैरियर में है सैडल बैग्स. Two different world, two different thinking. चॉकलेट खाओगे? पुग्छ जो यहाँ हेर न कति छ. लो खाओ एक खाओ जल्दी. एक खुला है. लो पकड़ो. कौन खाएगा? एक. राशन नहीं बढ़ रहा है भाई. भाई साहब गिर. भाई साहब क्या भागो इन्होंने. लास्ट एक. आधा खा लो. जाओ स्कूल जाओ. ऐसा करना है, कभी भी ऐसा मत कर. ऐसा करो, ऐसा करना है, ठीक है? ऐसे हैंडशेक मत करना, कोरोना फैलता है, ठीक है? ऐसा करने से कोरोना नहीं फैलता है. YouTube में जाएगा ये. Look at this guy. YouTube पे जाएगा वीडियो. Look at this guy. मस्त करते चाहिए था. सही है, जाएगा. जाओ नहीं, चला के जाओ. Look at the crowd.
हाईवे से हमें जाना है लेफ्ट अभी इस तरफ, लखनऊ लेफ्ट है। ओके, गोरखपुर सिटी उस तरफ है, इट्स रिटन ओवर देयर। It's very important to stay hydrated and also to eat healthy. क्या क्या मिलता है? बीटरूट भी है। For the next 100 kilometers maybe हमें ऐसा रास्ता में चलाना है। It's totally highway, no traffic, no cities probably, no towns, just some villages on the side. This is the kind of road we'll be riding on for today. कितना का है? 20 रुपये किलो। बाप रे, किलो हम कैसे ले जाएंगे? किलो तो नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे किलो का? 20 रुपया किलो। मुझे बस 2 पीस दीजिए, 10 रुपये रखिए। कितना आता है, कितना पीस आता है किलो में? ना जगह नहीं है ना, भैया के पास भी जगह नहीं है। नहीं, 2 पीस दीजिए, कोई बात नहीं। ये पका हुआ दीजिए, हाँ ये वाला, और थोड़ा बढ़िया वाला देना। अब खा लेते हैं कुछ। सुबह से बस वही पूरी के सहारे चल रहे थे। नाउ दे विल ऑब्वियसली आस्क समथिंग, सी ओके। यूट्यूब पे मतलब चला ना आपका, ये नाम है इसे, ये नाम है। साइलेंसर तो सही रहता था। और करो तो हो गया। बाप रे। So we are 100 kilometers away from Ayodhya. We'll have lunch and then we'll ride 200 kilometers straight. So this is what we ordered. This is chicken masala. और दिपेश भाई खा रहे हैं एक करी। We'll be having with this plain rice. कैमरा ऑन नहीं है यार, हमें भी ले लो, उसी में आ जाए मेरा। भैया सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपका नाम बोल दीजिए। आपका? उदय बहादुर। उदय बहादुर, यहीं से? तो यहाँ वेट कर रहे थे भैया, बाइक को देखने आए। कौन गाड़ी है? महान को BMW जी। भाई दिस बाइक अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ गाइस, अ लॉट, especially when I am on this bike with all the accessories, with all the luggages. Okay. Oh shit, oh क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हैं? अरे कैसे उड़ा के आ रहा है? पीछे लड़ा दी। थोड़े आस्ते की चलाओ यार, क्या कर रहा है? मुझे भी ब्रेक मार दिया आगे, आप भी ठोक दिया। क्या कर रहा है वो? किसे चला रहे हो भाई? अरे ठोक दिया इधर भी साला। अरे उनको देखो यार, मेरा हो जाएगा। आस्ते चलाओ भाई, आस्ते चलाओ। क्या कर रहे हो? उधर सटा दिए। हम सटाया? हेलमेट भी नहीं है भाई। जुम भीड़ भाई। हो गया रेस्ट ले लो ना 10 मिनट। हो जाएगा। यहाँ भीड़ हो गया। चलो छोड़ दो। अरे यार वो कहाँ गया? उसको भी दवाई करना है। आगे का आदमी ब्रेक मार दिया। मेरा नेक्स्ट मूव वही होगा, मैं भी ब्रेक ही मारूंगा। लेकिन वो पीछे से इतना उड़ा के आ रहा था ना, वो मुझे देखा नहीं और फिर मेरा यहाँ ठोक दिया और ये ठोके मुझे यहाँ लग गया। मुझे तो उतना टेंशन नहीं है, मुझे लगा नहीं है, आई एम ऑन गियर्स। लेकिन डू यू अंडरस्टैंड हेलमेट कितना इम्पोर्टेंट है? डू यू इवन रियलाइज? अभी यू सॉ द लाइव एक्सीडेंट, उसका चेहरा बिगड़ गया है just because he wasn't wearing a helmet and he was very aware of the situation, क्योंकि उसको पता है वो गलत कर रहा है because he was riding so fast. That's not a very big accident though. Take it positively. उतना कुछ हुआ नहीं है. He just had a cut. अभी हम जा रहे हैं अयोध्या की तरफ. I'm totally fine. The bike is totally fine. I'm not sure about the bag. I need to go check. I'll see you guys again when I reach अयोध्या. अयोध्या पहुंच गए हम लोग
And a little about Ayodhya. Ayodhya is also one of the oldest city in India, which is situated in Uttar Pradesh, and this is the birthplace of Ram. Okay, there he's taking pictures. And where was I? Okay, Lord Rama was born in Ayodhya, and it is also believed Lord Gautam Buddha and Mahavira came to this city and lived here once. Alright, this is a little something about Ayodhya. I don't have much time, the video is going to be very long. Okay, we are close to Lucknow. We are getting to see a lot of buildings, a lot of traffic. This is probably the first traffic of this Ladakh series. There is a very big mall on my right. BVD Green City is probably the name. Let's go ahead of this highway and see what is waiting for us. I'll see you till then. We have just entered Lucknow और हम यहाँ का लोकल बन गए. अरे भाई रास्ता में नहीं चला रहे हम. And the people are very sweet, they are very helpful. That is one thing I really wanted to say. I met some of the guys and they were telling us where to go, what would be the best place for us to stay if we are supposed to be leaving for Ladakh tomorrow. So they told us each and everything. They even told us the name of the hotel. So it's very helpful. क्या बोल रहा है? Okay, I am just getting done with my edits. We came here to the hotel at around 8 o'clock. 8 बज गया था शायद. And about the accident, I'm not injured. That guy must be injured a little. Like I don't know how he is. He went, so everything is fine as of now. दीपेश भाई सो गए, उनका एडिट हो गया, तो मेरा बाकी था थोड़ा. I need to sleep as well. Day 2 of Ladakh series comes to an end. Okay, I hope you guys liked it. Apart from the accident, I hope you guys liked it. I tried my best. That's it for today. Signing off. Please like, share and subscribe. I'll meet you guys in the next video. I am very sleepy. You can see on my face, I guess. So I'll see you guys in the next video then. Till then, take care and bye bye.